Good evening everyone. Myself, Dr. Reitu Patel, working as a consultant gynecologist and infertility specialist. Also, I am working as a senior clinical embryologist at Zydus Hospitals, Ahmedabad. Basically, infertility treatment, it is divided into two parts. One is the clinical part and second is the embryology part. In clinical part, which includes stimulation protocols, fertility enhancing laparoscopic surgeries, on embryology side, I handle quality management of the IVF lab, handling of gametes, embryos as well as freezing part. Today, I am going to talk about male fertility problems. अगर हम देखें तो our society, it is the male dominant society since beginning. To accept as the contributing factor of infertility, it is very difficult. To accept, it's very difficult for male, it becomes taboo for male and it has a direct impact on confidence level of individual. तो आज हम बात करेंगे what are the factors, what are the causes, problems and solutions regarding male fertility. इससे पहले we should understand what is infertility. Infertility means any couple living together for more than 1 year, keeping physically sexual relations at least twice in a week and not using any contraceptions. Still there is no pregnancy, we say they should need help from fertility consultant. Here we ask specifically what is the frequency of relation, is it satisfactory or not, contraceptive histories. Some couples use lubricant jellies. It is not safe for the sperms. It is a spermicidal. तो ये डिटेल पता होनी चाहिए. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इंसिडेंस ऑफ द इनफर्टिलिटी. अगर हम देखें तो 30% केसेस में फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 30% केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 40% में मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. सो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो 40 to 50% केसेस में ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल for the infertility. Now, we'll discuss about male and female regarding normal physiology of the reproductive system. अगर हम देखें, male produce millions of the sperms every day. It has not much effect of aging. So I say he is the factory of microtoys. Against that, female they born with the fixed number of eggs. पीछे से एक भी अंडा नया नहीं बनता है. And they get a single chance on each month. The single egg release on each month, and there is a definite effect of aging on female. So male side has more positivity compared to female side. Now we'll discuss what are the reasons, what are the causes for the male fertility problems. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेज वाइज. द फर्स्ट स्टेज, इट इज द कंट्रोल सेंट्रल कमांड ऑफ आवर बॉडी विच इंक्लूड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टेस्टिकुलर एक्सिस, also along with other endocrine glands. Any disturbance in this central command of our body, that leads to disturbance in sperm parameters. Disturbance in the production side, we say it is an end organ failure. Disturbance in the transport system, also everything is okay, central command is okay, production site is perfect, transport system is okay, still वीर्य का स्पर्म वीर्य के रूप में अगर बाहर नहीं आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल एंड इजेक्युलेटरी डिसफंक्शंस. So what are the medical conditions, what are the surgical conditions, what are the occupational, environmental factors, psychosexual behavior that leads to disturbance in these 4 stages. Now we'll discuss medical causes.
In medically, we always discuss first lifestyle factors, which includes junk food, smoking, bidi, cigarette, alcohol, tobacco chewing, drug consumptions, obesity. Then also we ask specifically about diabetes mellitus, because in diabetes they have erectile and retrograde ejaculation dysfunction. स्पर्म मीन्स वीर्य का सैंपल इन डायबिटीज में आने की जगह वो ब्लेडर में चला जाता है. इज ही टेकिंग एनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन? इज ही टेकिंग एनी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन? इज देयर अ हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शंस? वी से मम्स और काइटिस इन चाइल्डहुड, दैट इन हिंदी वी से गाल पचूरिया. Also, is there any autoimmune disorder, any genital tuberculosis of the reproductive system of male? And if anybody have a history of cancer and history of chemotherapy and radiotherapy, and that has a definite impact on the germ cells of the spermatogenesis. So, अगर यहाँ पे पहले से अगर पता हो तो वी कैन सेव देयर फर्टिलिटी बाय फ्रीजिंग ऑफ द स्पर्म्स एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी. अभी हम देखेंगे व्हाट आर द सर्जिकल रीजंस. सर्जिकली वी हैव टू फाइंड आउट इज देयर एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी रिगार्डिंग वाजेक्टोमी. हर्निया करके जो ऑपरेशंस आता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है. एनी एक्सीडेंटल इंजरी अगर टेस्टिस में अगर हुई है तो दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट. देन वी स्पेसिफिकली आस्क अबाउट ऑक्यूपेशन. तो जो लोग हाई टेम्परेचर का एक्सपोजर कंटिन्यूसली जिनको होता है, स्पेसिफिकली फार्मर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, दोज आर डूइंग साइक्लिंग वेरी मच, देन आईटी प्रोफेशनल्स, तो उसमें वी हैव टू आस्क एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिकली. दोज यंगस्टर अगर हम देखें तो दे रेगुलरली जिम में जाते हैं फॉर द बॉडी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग. तो इसके लिए दे यूजुअली टेक स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल बिकॉज it reduces the spermatogenesis, sperm production, and it leads to zero count. Now ये हुए सब reasons. What are the reasons जो responsible थे for the disturbance in the sperm parameters? Also we have to ask about the psychosexual behaviors. Is he homosexual? Also we have to find out feminism in the male. Now we'll discuss what are the reports जिससे हमें पता चलता है कि there is a disturbance in the sperm parameters. तो रिपोर्ट्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन इट इज़ अ सीमेन एनालिसिस, मीन्स वीर्य का रिपोर्ट. तो वीर्य के रिपोर्ट करवाने से पहले यूजुअली वी गिव सर्टेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लाइक देयर शुड बी 3 to 4 days का अब्स्टिनेंस होना चाहिए. कलेक्शन मस्ट बी इन अ स्टेराइल एंड डिस्पोजेबल कंटेनर में होना चाहिए. इफ पॉसिबल इट शुड बी इन द हॉस्पिटल विसिनिटी एंड कलेक्शन मस्ट बी बाय सेल्फ स्टिमुलेशन और मास्टरबेशन से होना चाहिए. अगर कोई हॉस्पिटल में कलेक्शन नहीं कर पाता है तो दे कैन ब्रिंग कलेक्शन फ्रॉम द होम, बट दे शुड बी ट्रांसफर इट विद इन 30 to 45 minutes में हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना रहता है विथ क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट, बिकॉज यहाँ पे वी शुड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सीमेन सैंपल. एक बार आइस पैक इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सीमेन सैंपल. वंस कलेक्शन एक बार आ जाता है देन इट इज शिफ्टेड इनटू एंड्रोलॉजी लैब where after certain criteria maintain करने के बाद we analyze the semen sample. We usually follow the WHO 2010 criteria for the semen analysis. Semen analysis से हमें
3 ऑप्शंस मिलते हैं. One is normal count, second is a subnormal count, and third is a zero count. Normal count means if anybody has at least 15 million sperms per milliliter, 39 to 40% मोटिलिटी पर मिलीलीटर एंड एटलीस्ट 4% भी नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, तो उसको हम नॉर्मल सीमेन एनालिसिस मानते हैं. तो नॉर्मल एंड सब नॉर्मल जो सैंपल होता है उसमें फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है इफ सीमेन सैंपल इज नॉर्मल. इफ देयर इज अ जीरो काउंट तो एक रिपोर्ट से हम नहीं मानते हैं. वी ऑलवेज advise for the second report after the 15 to 20 days with 3 to 4 days abstinence. Second report आ जाता है, then again there is a zero count, then we stamp it's Azospermia or zero count. Second investigations आता है DNA fragmentation test, जिससे पता चलता है कि कितने प्रतिशत शुक्राणु का DNA डैमेज है, क्रोमोसोम्स उनके डैमेज है, तो उसमें परसेंटेज के फॉर्म में आता है. अगर ये डीएनए डैमेज वाले स्पर्म्स मोर देन 27% है तो दे नीड टू ट्रीट इट. वी हैव टू ट्रीट देम. देन वी गो फॉर द सोनोग्राफी, स्क्रोटल सोनोग्राफी एंड डॉप्लर स्टडी टू रूल आउट एनी एनाटॉमिकल डिफेक्ट एंड ऑल्सो टू रूल आउट फॉर द वेरिकोसिल. Hormonal investigations if required. Then genetic investigations. Usually genetic investigation we do in a zero sperms count patients, and mostly 20 to 30% of zero count cases are due to the genetic abnormalities, and most common genetic abnormalities are chromosomal abnormalities, congenital bilateral absence of the vas deferens like CFTR gene mutations, and YQ microdeletions. We have discussed about all the investigations, all the reports. Once there is a reports has done, then we decide what will be the treatment parts. So treatment parts usually starts with the certain general instructions like they should maintain the lifestyle, because that includes exercise, balanced diet. They should avoid the alcohol, smoking. They should wear loose clothes. They should avoid the sauna bath and steam treatments. Then we ask specifically about if there is a pus cells in the सीमेन सैंपल. मीन्स अगर वीर्य के सैंपल में कोई इन्फेक्शन है तो वी शुड ट्रीट इट. यूजुअली वी ट्रीट इट विथ एंटीबायोटिक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. इफ देर इज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन्स देर इज अ एग्लूटिनेशन इन द सीमेन सैंपल. इट इज यूजुअली हेड टू हेड, टेल टू टेल एंड हेड टू टेल एग्लूटिनेशन होता है, जिसमें हम लो डोज स्टीरॉइड्स देते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, एंड इट हैज़ अ वेरी मच पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सीमेन सैंपल. देन यूजुअली वी गिव antioxidants and micronutrients. It is a very effective treatment for the low count. Then we give the hormonal treatments. So hormonal treatments, if there is a disturbance in the hormonal parameters, we give in a tablet form as well as injectable form. Now we'll discuss about the azospermia, means zero count. In zero count में we have to diagnose first it is obstructive azospermia or non-obstructive azospermia. So if there is a obstructive azospermia, then there are two options. One is a reconstructive microsurgery and second is a PESA, percutaneous epididymal sperm aspiration. It is a we can retrieve the sperms with the needle aspirations. अगर किसी को non-obstructive azospermia है तो that also we can retrieve the sperms with the surgical methods like TESA, TESE and micro-TESE. Once we get sperms, हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं, शुक्राणु मिल जाते हैं, then we use the technique
is called the ICSI, intracytoplasmic sperm injection. उसकी मदद से we can use these sperms for the fertilization of eggs. Before ICSI there was no choice. They have to use donor options for the fertility purpose. But after the invention of ICSI, it becomes very useful tool for the male infertility. We maintain the confidentiality and transparency of the treatment with all the patients. Now, we have started here. I complete my talk regarding male infertility. Now, gradually, we started to learn and we have accepted new normal life of corona pandemic. And here also, we have started all the ART procedures at Zydus hospitals, Ahmedabad. Any query regarding this male factor, you can contact me at Zydus hospitals, Ahmedabad. Namaste. Stay safe, stay healthy.